Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of perimeter and area. This is third question of its exercise 11.3. So the question says that if the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius. Also find the area of the sheet. So circumference of a circle is equal to, इसका फॉर्मूला था 2 पाई r. सो ये हमें गिवन है 154 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r. सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r इज इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2. सो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा 22 2 टाइम एंड 154 14 टाइम. 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 14 7 टाइम. सो हो जाएगा 49/2. So radius is equal to 24.5 meter. Then हमें find out करना है. I also find the area of sheet. So area of circle is equal to pi r square is equal to pi की वजह 22/7 into 24.5 square. So 22/7 into 600.25 is equal to, इसे सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1886.5 मीटर स्क्वायर. सो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 24.5 मीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 1886.5 मीटर स्क्वायर. थैंक यू.